A very good morning and good afternoon to all the participants who have already joined this wonderful seminar, which is going to create a lot of impact so far as your life is concerned, the positive approach is concerned, the forthcoming years in terms of the success you want to achieve. अगले 90 मिनट्स में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे. Those who already know what is NLP, उनको थोड़ा और ज़्यादा पता चलेगा. Those who haven't heard of NLP but what kind of difference NLP can create in your life, we are going to tell you. Myself, Preetham Goswami, I am an NLP coach, international training fellow. I have conducted my training seminars in more than 30 countries in last 20 years. I've authored 3 books for self-empowerment, and during these lockdown days, I'm writing my 4th book on the millionaire's mindset. And me with my partner Vinay Sharma, who's also an NLP coach, is with you, and both of us are going to share some deep insights of NLP. Though the course of NLP is 4 to 5 full days, but in this 90 minutes, we'll try to give you a snapshot of NLP. So the modus operandi of the program is like this, that in first 45 minutes, I'll share some ideas about NLP with some of the slides. And next 45 minutes, Vinay will be with you. And then we can take up a few questions. Now, since we will be around 90 to 100 participants very soon, so I request you to kindly put all your questions in chat box so that we'll pick one by one and then we can answer those questions. We have a couple of people who have been NLP participants in few of our face-to-face seminars. What kind of difference that they have, a positive difference they could see in their lives, they will also be sharing, and if required, they will also be answering your questions. So I'm sharing my screen to you. I want you to go through that screen so that my presentation is comparatively easier for you guys to understand. Can you see this screen? Those who are still having their mics unmute. Okay. Friends, you must have or might have heard about subconscious mind. For many of us, it's a mystery. And हम में से बहुत सारे लोगों को subconscious mind की theory थोड़ी बहुत पता है. आज, whatever you know, I'm going to take few steps forward so that you can, it can bring a lot of difference in your life. Whatever you want that can, bring positive difference in your life. Okay, during my presentation, I can ask few questions from you about your life, and if you feel comfortable, you can post your answer in chat box. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे हम NLP के बारे में जानते हैं, बहुत पुराना साइंस नहीं है. लास्ट ऑलमोस्ट 40 to 45 ईयर्स से ये साइंस इस दुनिया में आया है. एंड 2 अमेरिकन्स, डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर and John Grinder, are instrumental. They have been instrumental to bring this science and give this wonderful gift to all of us. और जब इन्होंने NLP बनाया तो there are quite a few people who are also instrumental helping them creating various methods and modalities of neuro-linguistic programming, जिसमें वर्जीनिया सैटिर है, फ्रिट्ज बोल्स हैं, मिल्टन एरिक्सन है. इसमें से कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग साइकोलॉजी के फील्ड से हैं, कुछ लोग प्रोफेसर हैं, और इन्होंने मिलकर के काफी कुछ काम किया और NLP को क्रिएट किया. मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और लकी समझता हूं कि we have been practicing NLP for last 10 years. We have been conducting our seminars across the world. But I would be saying that I am so privileged that I got chance to take my master's course in NLP from Dr. Richard Bandler, जिनका फोटो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. मैंने लंदन जाके उनका मास्टर्स किया NLP में,
और वो एक अलग ही डिफरेंट, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे आपके साथ ये फोटो शेयर कर रहा हूँ that when I did my course with Dr. Richard Bandler in UK, and one of our colleague from Novice Coach. So I'll be speaking about it little later. This slide speaks about genius of others. What does that mean, genius of others? Genius of others means that जब भी आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेट अस इफ यू आर इन अ बिजनेस, यू आर लुकिंग एट योर कॉम्पिटिटर्स, few of them are doing better than you, and you are doing better than few of them. When you look at, if you are a student, when you look at other students of your class performing better than you, if you are a speaker or a trainer or a coach, and what happens when you see people, few of them are growing faster than you, if you look at the business acumen and negotiation skills of few people, you find some of them are far better than us. What I mean to say is that I do not claim that each one of us has everything within us. So if I look at people, I find somebody is good in something. And if I really want to learn the genius from those people and want to implement in my life, it's not that easy. Because at times when I see somebody doing a very good sales, somebody is very good at marketing, somebody is very good at singing, somebody is very confident in front of people. So what logic I give to myself that, if I'm not that confident speaking in front of hundreds of people, I say myself that's not my cup of tea. I'm not that confident enough. That person is born with those capabilities. Maybe this person is more, comfortable using these linguistic capabilities as compared to mine. बट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है। एनएलपी एक इतनी जबरदस्त चीज है, ऐसे टूल्स और टेक्निक्स आपको अवेलेबल कराती है जिसके थ्रू आप दूसरों की कुछ कैपेबिलिटीज को, जिनसे आप इंप्रेस हो, जिनको आप इम्बाइब करना चाहते हो, यू कैन डू इट, यू कैन ब्रिंग इन योर ओन पर्सनालिटी। हाउ डज इट हैपन? अगेन आई वुड से, अगर मैं जीनियस ऑफ अदर्स के बारे में बात करूं तो मुझे आई नीड 6 आवर्स टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। पर मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जैसे मोबाइल और कंप्यूटर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, व्हेन यू कनेक्ट वन मोबाइल विद अदर मोबाइल थ्रू ब्लूटूथ, व्हाट हैपेंस, both the mobiles can transfer data easily with each other without any boundation. आपका एप्लीकेशन में भी यूज कर सकता हूँ, आपका डेटा में भी यूज कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, सिमिलर थिंग हैपेंस व्हेन टू पीपल are having Bluetooth connectivity. How it happens, I'll be telling you a little later. So अगर दो लोगों के बीच में Bluetooth connectivity है, that means they are under a subconscious or unconscious rapport. When two guys are under unconscious rapport, there is a very good chance that if you have an intent to copy somebody's genius in your personality, it is possible for you. इसके बारे में कुछ और बात करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि क्यों ये जीनियस, आप किस तरह से आप इस जीनियस को कॉपी कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं। एक इंसान की क्या ख्वाहिश होती है? आज जितने भी लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, उसका मकसद हो सकता है कि आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं। यू आर यूटिलाइजिंग योर लॉकडाउन डेज, लर्निंग न्यू थिंग्स। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मैं अपनी लाइफ में जैसा कर रहा हूं उससे और बेहतर करूं। तो वन स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ समबडी टू अर्न मोर व्हाट वी आर एक्चुअली अर्निंग। यहां मैंने लिखा है डबल योर इनकम। डजंट मीन दैट आई वांट टू रेस्ट्रिक्ट यू गाइस जस्ट टू डबल what you are earning right now. Meaning here that whatever you are earning right now, you can enhance your income. Second, what else we need? देखा जाए तो मेजरली हमारी जिंदगी में 4 डायमेंशंस हैं जो हमको चाहिए। दूसरा है जो मुझे चाहिए वो है अच्छी रिलेशनशिप। तीसरा है स्टेट ऑफ माइंड, और चौथा है योर हेल्थ। हर इंसान चाहता है कि मैं जितना पैसा कमा रहा हूं उससे और ज्यादा कमाऊं। हर इंसान चाहता है कि मेरी फैमिली, सोशल और मेरी रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी रहे, लोग मुझे मेरी रिलेशनशिप को वैल्यू करें। आई वांट माई सेल्फ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस,
I don't want to. I have money, I have good relationship, but I'm suffering from so many diseases. Then my life is like a hell. So how I can help myself being free from unwanted diseases? And then you have everything in your life, but still the state of mind is not proper. You feel like, you know, at times you go in a low state of mind, you don't feel happy, you feel stressed, you feel depressed. So is there any way, methodology through which you can enhance your state of mind? Yes, my dear friends, ये चारों क्वेश्चंस के जवाब आपके हम एनएलपी के थ्रू आपको देने वाले हैं. इसके अलावा अगर आपके और भी कोई गोल्स हैं, दैट यू वांट टू बिकम वेरी पॉपुलर, यू वांट टू एनहांस योर नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड, you want to get recognized in the society, you want to do something very very extraordinary or bigger in your life, yes it is possible. And ऐसा क्यों होता है कि हम उनको अचीव नहीं कर पाते और क्यों कुछ लोग उनको अचीव कर पाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. अगर ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में हो तो हम कहेंगे लाइफ इज फुल ऑफ अबंडेंस. अबंडेंस मीन्स वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ इज in ample quantity, so there is no shortage, so you're not supposed to use those resources with any rationing. अब जरा माइंड की मैकेनिज्म को समझते हैं. जब हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और हम अपने दिमाग पर भी try to create a pressure that what should I do, how should I think, what decision I should take, we generally do it consciously. और हम जितना भी फोकस हमारे दिमाग पर करते हैं वो हमारा जनरली कॉन्शियस माइंड होता है. एंड कॉन्शियस माइंड इज जस्ट 10% ऑफ आवर टोटल मेंटल लाइफ. व्हाट डू यू मीन बाय टोटल मेंटल लाइफ? के पूरी जिंदगी में आप अपने दिमाग को जितना यूज करते हैं उसमें से 10% सिर्फ कॉन्शियस माइंड होता है. इट इज नथिंग बट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग व्हिच यू कैन सी इन स्लाइड. Rest is your subconscious mind, which is further divided into three parts: a pre-conscious state, a subconscious state, and unconscious state. We will try to understand what are the different tasks these four states of mind are performing for you and how they are helping you to become a better or not better in your life. Now, if you see that slide, as I told you that the conscious mind is just 10% of your total mental life and it has only three tasks: analyze, it just analyze few things, whatever you see and analyze, कुछ consciously सोचना और plan करना, and the third one is short-term memory. What do you mean by short-term memory? When I'm talking to you, I need to remind myself that okay, I am supposed to speak these things. If I'm going to market for shopping, I keep certain items in my short-term memory, and once the task is achieved, I'm not supposed to remember those things. So short-term memory. It is like computer. जैसे कंप्यूटर जब आप ऑन करते हो तो वो कंप्यूटर जब तक ऑन होता है एक मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. जब तक कंप्यूटर चालू हुई तब तक वो मेमोरी रहती है. तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी शॉर्ट टर्म मेमोरीज को रखता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, माई सबकॉन्शियस माइंड is storing all the memories which are there for years together since my childhood. Now you must be wondering what sort of memory. Every second 2 million images are flashing in my mind. Your unconscious and subconscious mind is processing millions and billions of somebody muted me. Okay, so it is processing so many information. If I tell you, say if somebody of you is 30 or 35-year-old, and if I tell you to go back to your school days and think about your school days, think about your few best friends, think about some extraordinary memories of your school times. When I give you this instruction, what will happen? Your mind starts Google search, go to the relevant folder of your childhood memories, extract certain memories, and will tell you that you used to study in that school. There were 4 friends. जो आप कितनी मस्ती मजाक करते थे, आपके टीचर्स कौन होते थे, स्कूल की बिल्डिंग कैसे होती थी. Everything would be retrieved from your memory. This was long-term memory. It does not mean that you need to remind your subconscious mind on a daily basis कि मुझे इसे भूलना नहीं, मुझे रोज इसको याद रखना है. Once something is retained by your subconscious mind,
it is always there permanent unless you decide to delete it. Second one is your subconscious mind is domain of all emotions and feelings. Your conscious mind is a practical mind. It's like a machine. It doesn't have any space for any emotion, any feeling. So every emotion, whether it's a good or bad, all feelings, whether good or bad, they are stored in your subconscious mind. Let us talk about good and bad habits. किसी को जल्दी उठने की आदत है, अच्छी बात है. किसी को देर तक सोने की आदत है. किसी को रात को सोने से पहले ब्रश करके सोने की आदत है. All these good and bad habits are there in subconscious mind. और जो अच्छी या बुरी हैबिट्स है, subconscious mind controls all your habits, your relationship patterns, your addictions, your involuntary body function. What does that mean? आपका हार्ट अपने आप बीट नहीं हो रहा, your mind is making it happen. आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो चल रहा है, बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, योर अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोलिंग ऑल योर बॉडी फंक्शंस व्हिच यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट. और कभी कभी होता है आप कॉन्शियसली ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हो, यू इनहेल यू एक्सहेल, बट द मोमेंट यू फॉरगेट टू डू दैट बिकॉज आप ड्रिफ्ट हो जाते हो किसी और थॉट में, तो अगेन व्हेनेवर यू गेट ड्रिफ्टेड, योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स द चार्ज एंड स्टार्ट giving you breathing as per the system. So every such things which are written under subconscious mind, it is nothing but the various task of subconscious mind. बीच बीच में मैं unconscious mind का यूज कर रहा हूं. तो देखिए subconscious mind की 3 स्टेजेस होती है. जब आप बहुत सटल स्टेज में हो, जब आप कॉन्शियस से धीरे धीरे सबकॉन्शियस में जा रहे हो, तो प्री कॉन्शियस स्टेट है, आपका कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव है और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो रहा है. जब आप पूरी तरह से कॉन्शियस को बाजू में रख करके सबकॉन्शियस में होते हो, यू आर बिजी थिंकिंग समथिंग, यू आर लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स, यू आर इन ड्राउजी स्टेट, यू आर इन अ स्लीपिंग स्टेट, तो यू आर इनटू अ सबकॉन्शियस स्टेट. जब आप बहुत डीप सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हो, जब हम बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं, तब भी हम ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, या जब आप स्लीप में चले जाते हो, तो वो अनकॉन्शियस स्टेट कहती है, लेकिन ये मान करके चले कि आपका दिमाग उस वक्त भी काम कर रहा होता है. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइंड की जो प्रोग्रामिंग है. अब देखिए हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, जो कुछ भी मैंने अचीव किया, whatever I could achieve, whatever I could not achieve, this is I take the responsibility of everything, but the real person or real thing which is responsible for all things happening in my life is my subconscious mind. And whatever programming you have done in past few years or past so many years since your childhood is responsible for it. I'll give you an example. Many people come to us for personal coaching. There could be various reasons to come to us for personal coaching. They want to enhance your business, they want to earn more money, or they want to save more money, they want to get rid of some disease, they want better relationships in their lives, or they have a blueprint, but they want a short results in their lives in terms of achievement of their goals are concerned. तो जब हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि why they have been struggling and why they were not able to achieve despite the fact that they had everything in their life but still the results are not same. वो हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं दूसरी, और जब वो दूसरों को कंपेयर करते हैं अपने आप से, लगता है कि यार वो कम मेहनत करता है फिर भी उसको लाइफ में रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं. और कभी कभी जब हम उसकी मैकेनिज्म को नहीं समझते, तो व्हाट वी थिंक, वी स्टार्ट बिलीविंग ऑन आवर लक, on our horoscope, and then we start saying यार उसका किस्मत अच्छा है, उसका लक अच्छा है, that's why the person is performing. I am doing more hard work, I have better degrees, I have better resources, but still the other person is growing faster than I am growing. Now I want to ask a question from all of you. Whatever you guys are doing in your life, आप जॉब में होंगे, आप अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप में से कुछ कोचेज हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं, कुछ थेरेपिस्ट हैं, कुछ टीचर्स हैं, सब आप अपना काम कर रहे हैं. आज तक बचपन से लेकर के जब तक आपने फॉर्मल एजुकेशन की, कितने आवर्स यू स्पेंट रीडिंग दोज बुक्स टू पास दोज एग्जामिनेशन, हाउ मच मनी यू स्पेंड योर कॉलेजेस एंड स्कूल्स, ट्यूशंस एंड कोचिंग्स. आज जो आप कुछ काम कर रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में, बिजनेस कर रहे हो, आप देखिए उसमें आपकी लाइफ स्किल्स, आपके थिंकिंग प्रोसेस, आपकी मेंटल टफनेस, आपका ऑप्टिमिज्म, आपकी पॉजिटिविटी, हाउ टू हैंडल
difficult people, how to create network, how to sales, how to market. These skills are playing more important role, जिसके लिए हमने कभी कोई पेमेंट नहीं किया, जिसके लिए हमने कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, जिसको जैसे जैसे आता गया, जिसको जितना आता है वो उसके साथ उतना जस्टिस करता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज है कि जो सीधा सीधा आपकी लाइफ के गोल्स को, लाइफ के आउटकम को कंट्रोल करती है, डायरेक्ट करती है। तो माइंड की प्रोग्रामिंग क्या होती है कि रेगुलरली हम कोई चीज को रिपीट करते हैं। रिपीट डज नॉट मीन ओनली एक्शन। इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग ओवर एंड अगेन, if you are listening something over and again, if you are reading something over and again, and if you are doing something repetitively, that helps your mind getting programmed whatever you are repeating, और इसी से हमारे बिलीफ्स बनते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर कोई बचपन से अपने फैमिली में सुनता आया है कि पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ गलत काम करना पड़ता है, इलीगल काम करना पड़ता है, या पैसे के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम्स भी जिंदगी में आती है, आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आपकी हेल्थ और फैमिली सेक्रीफाइस होती है। अगर आपने बचपन से ऐसी बातों को सुना है, पढ़ा है, भरोसा किया है, या कुछ बातों से ऐसा इन्फ्लुएंस आपने ड्रॉ किया है, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी पैसे को लेकर के जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो सही नहीं है। And despite whatever amount you invest in your business, whatever efforts you do in your business, कितना भी आप ऑप्टिमिज्म दिखा लीजिए, लेकिन जब तक इस प्रोग्रामिंग को आप ठीक नहीं करोगे, रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू कम। इसी तरह से अगर मैं रिलेशनशिप की भी बात करूं, तो वहां पर भी मेरी प्रोग्रामिंग बचपन से जो कुछ मैंने देखा है, सुना है, जिस तरह के कमांड्स मुझे दिए गए हैं, आज मेरा रिलेशनशिप का भी पैटर्न वही है। और ये जो रिपीटेटिवली मैंने सुना, बोला, कहा, पढ़ा, whatever, that created various beliefs in my mind. You know, that's very surprised. I was taking public speaking workshop in Delhi, and then there were 50 people. It was 3 days workshop, and then 50 odd participants attending my workshop 4 years back. तो एक पार्टिसिपेंट मेरे से बात करता है, जब हम स्टेज फियर की बात कर रहे थे, then the participant said, "Sir, my dad sent me to this workshop forcefully. I never wanted to come." I asked why. He said, "Sir, speaking is not my cup of tea." And then I asked, "How did you decide that speaking is not your cup of tea?" He said, "Sir, when I was in 4th standard, my class teacher told me to read out a speech in school assembly. I went on the stage, but I could not read even couple of lines. I got stuck. I started crying, and then I decided I will never speak in my life. I will never go on stage. And then I decided it's not my cup of tea." अब हुआ क्या दोस्तों इससे कि 4th स्टैंडर्ड में कोई इनका एक खराब एक्सपीरियंस हुआ। एक्सपीरियंस से भी हमारे बिलीफ बनते हैं। उस एक्सपीरियंस से आपने क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ किया? एक इन्फ्रेंस ये ड्रॉ कर सकते थे दैट आई नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट, I need to be more prepared before I come on the stage. लेकिन उसने क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ किया? No, I cannot speak in front of people. Speaking is not my cup of tea. और 4 years से लेकर के आज वो बंदा 21 years का है, 17 सालों में उसका जो बिलीफ क्रिएट हुआ 4th स्टैंडर्ड में, इन 15-16 सालों या 10-12 सालों में हुआ क्या कि उसको जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली थी बोलने की, उसने किसी भी अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं किया, क्योंकि उसने अपने सामने एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर ली। एंड व्हाट वाज दैट लक्ष्मण रेखा? दैट आई कैन नॉट स्पीक। अब जरा सोच के देखिए, हम अपनी कैपेबिलिटीज की बात करें, स्किल्स की बात करें, इनहेरेंट क्वालिटीज की बात करें, पोटेंशियल्स की बात करें, बचपन से लेकर के आज तक ऐसे कितने ही बिलीफ हमने हमारी जिंदगी में क्रिएट किए हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये बिलीफ, ये थॉट प्रोसेस क्रिएट होता कैसे है? ये क्रिएट होता है बहुत सारी वजह से। पास्ट एक्सपीरियंस, अभी मैंने एग्जांपल दिया दैट हाउ somebody's past experience of couple of minutes in 4th standard create a long lasting belief in somebody's mind. Sometime हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें होती जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन हम उसका इन्फ्रेंस अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं। हम थोड़े से बायस्ड होते हैं, हम थोड़े से प्रीजुडिस होते हैं,
जैसे मान लीजिए आपने बुक्स में पढ़ा या आपने कहीं से सुना या किसी के एक्सपीरियंस से आपने ये चीज ड्रॉ की that people are not worth trusting. लोग भरोसे लायक नहीं होते. Now ये एक you are prejudiced to this thought because you never experienced it. You don't have even a single instance in your life and somebody cheated you. But somehow through others' experiences or by reading something you drew this inference that you should not trust people. Okay? अब आपका एक बिलीफ क्रिएट हो गया. तो आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने साथियों पर भरोसा नहीं करते. आप बिजनेस कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज पर भरोसा नहीं करते. आप किसी के साथ कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अलायंस करने जा रहे हैं तो यू डोंट ट्रस्ट पीपल. Media these days is a very, very big influencer creating our beliefs, good or bad. May it be social media, digital media, newspapers, whatever you come across. Then your friends and peers, parents and coaches and teachers. I tell you, my dear friends, आपकी जिंदगी में जितने beliefs बने हैं उसमें से 70 to 80% beliefs इन 3 वजह से बनते हैं कि आपके कोचेज ने और टीचर्स ने आपको क्या कहा, पेरेंट्स ने क्या कहा, फिर फ्रेंड्स एंड पीयर्स ने क्या कहा. ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्टली आपको क्या बोला. आप अपने रूम में बैठे हुए स्टडी कर रहे थे लेकिन बाहर मदर फादर के बीच में कोई डिस्कशन चल रहा था, उससे भी आपका बिलीफ बना. उन्होंने अपने रिलेटिव के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया, उससे भी आपका बिलीफ बना. तो सबसे ज्यादा टाइम आप इन 3 लोगों के साथ अपना 70-80% स्पेंड करते हो तो आपका ज्यादातर बिलीफ इन लोगों की वजह से क्रिएट होता है. अब देखिए ये बिलीफ्स आपके एक्शन में कैसे आते हैं और कैसे आपको अफेक्ट करते हैं. आपका बिलीफ, आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड्स और आपकी फीलिंग, ये 4 चीजें मिलकर के सीधा सीधा आपके एक्शंस को इफेक्ट करती है. अगेन आई विल रिपीट दैट एग्जांपल. इन 4th स्टैंडर्ड दैट गाय हैड अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ फेलिंग मिजरेबली ऑन द स्टेज एंड नॉट एबल टू स्पीक और utter a single word. Because of that incident, there was a belief and negative feelings, and those beliefs and feelings stopped that person of going to stage and speaking, giving presentation next 15 years. So आज उस बिलीफ ने अगले 15 साल तक उस इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करने दिया जिससे वो लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे सकता था. और उससे उसको जो मौके मिल सकते थे, उससे उसको जो रिजल्ट्स मिल सकते थे, वो रिजल्ट्स, बिकॉज माय एक्शंस एंड माय बिहेवियर्स डिसाइड्स ऑल द रिजल्ट्स ऑफ माय लाइफ. इफ माय थिंकिंग इज नॉट करेक्ट, माय एक्शन विल नॉट बी करेक्ट. इफ माय एक्शन इज नॉट करेक्ट, of course I will not achieve the desired results in my life. So where is the root cause? Root cause is my beliefs. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बिलीफ तो बन गए. अफसोस की बात यह है मेरे दोस्तों कि ये जो बिलीफ आपके पास है, हम में से ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में से कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं. आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स कि how you can identify those beliefs. Let me give you a couple of tips. आप इस सेमिनार को खत्म करने के बाद take a paper and pen, sit in a quiet environment and write few areas of your life where you could not get desired success. जहां आपको desired success नहीं मिली. Maybe business, maybe relationship, maybe society, maybe health, or maybe something else. Maybe your relationship with your kids, maybe your parenting, maybe your relationship with your friends, whatever it is. उनको लिखिए, बहुत स्पेसिफिक लिखिए, बहुत माइन्यूटली लिखिए और फिर सोच करके रखिए कि क्या रीजन रहे कि आपको वो चीज नहीं मिली. जब आप बहुत गहराई से, बहुत इन डेप्थ होकर के उसके बारे में सोचोगे, you will take yourself in that past moment when you could not get the result. You will identify certain pattern of your thinking. और तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं ऐसे सोचता था. When I was dealing with people who were struggling to make money, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी निकल के सामने आया कि जब वो पैसा कमाते थे, उनके पास कोई चेक आता था, बैंक में आता, तो हर वक्त उनको एक डर रहता था कि आज तो मैंने इतना पैसा कमा लिया, अगले महीने भी मेरे बिजनेस में इतनी सेल होगी, उसकी क्या गारंटी है, और अगर उतनी सेल नहीं हुई तो ये जो पैसा मैंने इस महीने बनाया है, दैट विल बी लॉस्ट. Now, fear of losing money is also a big barrier, an enemy of yours creating wealth. Getting my dear friend? So these are the limiting beliefs. जब तक आपको मालूम नहीं है कि आपके limiting beliefs कौन से हैं, तब तक आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते. तो first you need to identify your limiting beliefs. Then I'll tell you how to get rid of those beliefs. Okay. Now
there is a word called neurological pathways. In NLP we talk about neurological pathways. मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, आपके जितने भी बिहेवियरल और इमोशनल पैटर्न्स हैं, there are neurological pathways for all those patterns. Let me give an example. मान लीजिए यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 65 पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, एंड इफ आई आस्क दैट कितने लोगों को गुस्से का प्रॉब्लम है, हाउ मेनी of these participants have behavior pattern that they get angry, they react, they cannot control their temperament, so maybe 40 or 50% would raise their hands. अब कभी आपने जानने की कोशिश की, जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में लोगों से बात करते हैं तो व्हाट यू टेल, आई हैव कपल ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ. एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी की है मेरा गुस्सा. आई वांट टू करेक्ट यू ओवर हियर. गुस्सा आपकी प्रॉब्लम नहीं है. गुस्सा प्रॉब्लम तो कुछ और है, गुस्सा उस प्रॉब्लम का सिम्टम है. ओके, हैव यू एवर ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट सिम्टम? इफ नॉट, इट इज राइट टाइम. हाउ इट गॉट क्रिएटेड, हाउ न्यूरोलॉजिकल पाथवे क्रिएटेड. ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज इन समबडीज चाइल्डहुड, उसने अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड किया. सपोज इन एट द एज ऑफ 2 or 3 years of age. We start learning from others' behavior right at the beginning when I am 4 and 5 months old. I start learning from the behavior of my own parents. तो मैं 2-3 साल की उम्र में मैं मम्मी पापा से, मॉम डैड से, I used to ask for chocolates and toffees, and they used to deny, but I never reacted. One fine day, I saw a 3-year-old boy. 3 साल के बच्चे को देखा कि उसको उसकी माँ ने चॉकलेट के लिए मना किया तो जमीन पे लेट गया, जोर जोर से रोने लगा, जिद करने लगा, चीजों को उठा के फेंकने लगा, तो उसकी माँ ने उसको चॉकलेट दी. तो ये बिहेवियर पैटर्न इस बंदे ने कॉपी कर लिया. दिस इज द राइट वे, दिस इज अ गुड वे टू गेट योर थिंग्स डन, टू गेट योर विशेस फुलफिल. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड बाय हिज मॉम दैट शी इज नॉट गोइंग टू गिव हिम चॉकलेट, ही आल्सो स्टार्टेड showing his anger, showing his resentment towards that decision, and then he found it's really working. Now it slowly and gradually, which he started consciously, it became his pattern. Now here it has become your neurological pathway. Whenever certain things arises in same format, your mind is programmed to behave in certain way. गुस्सा आप जानबूझ करके नहीं करते हो, अपने आप आ जाता है, because you have been programmed. सब लोगों को एक ही बात पे गुस्सा नहीं आता, हर इंसान को अलग अलग बात पे गुस्सा आता है. सब लोगों की प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से होती है. आज आप बड़े हो गए, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग क्या है बचपन से, कि अगर आपने किसी के सामने अपनी विश रखी, अपना प्रपोजल रखा और सामने वाले इंसान ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो आपको गुस्सा आता है. दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल पाथवे विच गॉट क्रिएटेड इन योर चाइल्डहुड डेज. इसी तरह से आपके जितने बिलीफ हैं, इमोशनल पैटर्न्स हैं, ये सारी की सारी चीजें किसी न किसी तरह से आपने न्यूरोलॉजिकल पाथवे बना लिए हैं. आपके दिमाग में लॉजिकल सर्किट्स क्रिएट हो गए हैं, प्रोग्राम्स क्रिएट हो गए. तो जब भी वो सिचुएशन आती है, आपका दिमाग का सर्किट वैसे ही बिहेव करता है, वही आउटकम करता है. तो चाहे फिर पैसा कमाने की बात हो, चाहे इमोशंस को कंट्रोल करने की बात हो, चाहे आपके दिमाग को हाई स्टेट में रखने की बात हो, चाहे रिलेशनशिप अच्छा बनाने की बात हो, चाहे लोगों से डील करने की बात हो, चाहे अपने हेल्थ का, अपना पर्सनल वेलबींग का बात हो, everything is controlled by the program you have inside you, and your all past life has created, is responsible to create this program. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसी चीज पर बात करती है कि बचपन से लेकर के आज तक आपने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो कुछ भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, बिलीफ्स बनाए हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं. वी कैन रिप्लेस इट विद बेटर प्रोग्राम्स. NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, can help you in all these things. किस किस चीज में आपकी मदद कर सकता है? रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, changing your lifestyle. You have everything, but you're not happy with your lifestyle. You have a lot of stress. You want to maximize your performance. Let me tell you, my dear friends, maximizing performance, whatever you do. अगर आप गाना गाते हो, अगर आप डांस करते हो, अगर आप सेल्स करते हो, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आप NLP को ठीक तरीके से यूज करते हो, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो. मिस्टर AR रहमान, जो बहुत बड़े संगीतकार हैं हमारे देश के, उनका जो म्यूजिक स्कूल चलता है, वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी NLP के थ्रू उनकी म्यूजिक लर्निंग एबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाता है. सेल्स के अंदर NLP is used. Many big companies, their sales staff is specifically trained how to use NLP in sales. Hello. Similarly, Hello.
I request somebody is unmuted mic, so please kindly mute it, okay? Similarly, when I talk about Mr. Barack Obama, ex-president of United States, when 2008 he was contesting election, he was given 6 months coaching by Tony Robbins. He was trained in NLP how to deliver your speech, how to be successful as a president, how to win that election. So maximizing performance, whatever you do, even you're doing study or doing something, आप अपनी performance को यहाँ इस स्टेज से और टॉप स्टेज पर कैसे ले जा सकते हो. आपको तमाम सारे फियर और फोबियाज हैं, विद इन 45 मिनट्स और 60 मिनट्स यू कैन चेंज इट. बेटर डिसीजन मेकिंग. जनरली हम जब डिसीजन लेते हैं तो बायस्ड डिसीजन होते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में झगड़ा होता है. वी आर नॉट कंफर्टेबल टेकिंग दैट डिसीजन, बट समहाउ वी टेक, at times we go for wrong decision, but NLP provide you such a tool that you can take your decision in a scientific way. And making success strategy, यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है. मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा. हमारा एक NLP का बैच चल रहा था जयपुर में, लास्ट मई की बात है, और वहां पर एक किसी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक मैनेजर आए हुए थे हमारे प्रोग्राम को अटेंड करने. इट वाज 5 days वर्कशॉप दैट टाइम. एंड उन्होंने अपनी वीकनेसेस, 2 वीकनेसेस लिखी थी कि एक तो उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया था, मतलब वो किसी बंद जगह पर बहुत देर तक नहीं रह सकते थे, लिफ्ट में कंफर्टेबल नहीं होते थे, प्लस उनको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत जबरदस्त फोबिया था. ही वाज अ वेरी नाइस जेंटलमैन, वेरी गुड एट स्पीकिंग एबिलिटी. 3 लोगों के अंदर बैठ करके फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा है. इट इज वेरी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, बट यू आस्क हिम टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 20, 30, 40 पीपल हु वोंट बी एबल टू स्पीक. एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग, he sent me a video. Sir, I participated. हमने उसको पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग नहीं दिया, हमने सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस के ऊपर काम किया. उनका जो फियर था पब्लिक स्पीकिंग का, उसके ऊपर काम किया. लिफ्ट का जो फियर था उसके ऊपर काम किया. 2 महीने के बाद उनका मेरे पास फोन आया. उन्होंने एक वीडियो हमारे साथ शेयर किया कि सर, आई अटेंडेड अ सेमिनार इन अ 5-star होटल. इट वाज अ 4 days सेमिनार एंड I gave a presentation. It was marked as one of the best presentation in that seminar, and credit goes to that guy who was afraid of public speaking and never took public speaking class, but just by fine tuning his confidence level, eliminating that limiting belief, he could do that. एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने काफी कुछ सुना है, और मैं उसी से मिलती जुलती बात आपके पास यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा. दुनिया के माने जाने फिजिक्स के साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही. एवरीथिंग इज एनर्जी, and that's all there's to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, my dear friends. This is physics. ये physics है, और ये मैंने नहीं कहा, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है. और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हो, सीक्रेट मूवी अगर आपने देखी हो तो वहां पर भी ये बात की जाती है. बट प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स, ज्यादातर जो ट्रेनिंग्स आप देखते हो, सुनते हो, वीडियोस देखते हो, सेल्फ एम्पावरमेंट की बुक्स पढ़ते हो, या सीक्रेट भी की बुक को आपने पढ़ा है या उस मूवी को आपने देखा है, तो दे टेल यू व्हाट इज टू बी डन, बट दे नेवर टेल यू हाउ इट इज टू बी डन. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. इफ समबडी कम्स टू मी एंड टेल मी, सर 24/7 मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, व्हाट शुड आई डू? I tried meditation, I tried reading good books, but I'm not able to get rid of those negative thoughts. अब बताइए मेरे पास क्या आंसर है? मैं कहूँगा भाई बुक पढ़ ले, मेडिटेशन कर ले, वीडियो देख ले, बट उससे तो उसका कोई फर्क नहीं हो रहा. NLP के पास ऐसे टूल्स हैं, विद इन 20-30 मिनट्स आई कैन एलिमिनेट एनीबडीज नेगेटिव सो इजीली. तो NLP फोकसेस ऑन हाउ टू डू इट, नॉट व्हाट टू डू. हमें करना क्या है तो सबको मालूम है, करना कैसे है मुसीबत वही है, प्रॉब्लम वही है. और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पर भी ये कहा गया है कि एवरी थॉट हैज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड. सो इफ आई वांट टू अट्रैक्ट माय गोल्स, सर्टेन पोजीशंस टुवर्ड्स मी, सर्टेन अचीवमेंट्स टू मी, तो मुझे मेरे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा. मुझे मेरी पॉजिटिविटी को, मेरे थिंकिंग के लेवल को वहां ले जाना पड़ेगा. अभी कहना आसान है, करना मुश्किल है. करूं कैसे? व्हाट इज द साइंस? ऑफ कोर्स NLP प्रोवाइड्स यू सर्टेन दोस टेक्निक्स. ये होता कैसे है? बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसे आपकी प्रोग्रामिंग हुई है, पहले उस प्रोग्राम को हम चेंज करके उसकी जगह नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं. अगर आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपने पढ़ी हो, 2001 में मैंने एक बुक पढ़ी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. उनका फॉर्मूला कहता है कि आपके दिमाग में कोई भी चीज अगर स्टोर है तो उसको चेंज करने में 21 डेज का टाइम लगता है. जबकि रॉबिन शर्मा जो कैनेडियन ऑथर हैं,
वो 60 डेज का फॉर्मूला बताते हैं, बट एनएलपी में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है. योर माइंड कैन बी रीप्रोग्राम्ड इन फ्यू मिनट्स, इन फ्यू आवर्स और इन फ्यू डेज, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम और बिलीव्स यू हैव इन योर माइंड. तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. अब मेरे साथ ही मिस्टर विनय शर्मा जो एनएलपी के कोच हैं, पिछले 10 सालों से हम साथ मिलकर के एनएलपी ही नहीं बहुत बहुत तरह की ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं. कॉर्पोरेट्स हम जाते हैं, इंडिया में करते हैं, इंडिया के बाहर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं. तो मैं मिस्टर विनय शर्मा को बुलाना चाहूँगा. इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अ वेरी गुड प्रीचर एंड स्पीकर एंड अ वेरी गुड एनएलपी कोच टू शेयर फर्दर थिंग्स. और कुछ एक दो एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो आपको ये भी बताएंगे कि हाउ टू यूज एनएलपी. ओवर टू विनय शर्मा. Yeah. Thank you so much, Pritam ji. It was very nice hearing from you that how the subconscious mind can help you to grow and do wonders in your life. And connecting to your previous slides, I would just like to focus or put some light on the topic that if 10% of your mind which you are using right now can do so much, then how much if you can learn even to use another 10% of it? Can you ever imagine that what it can do for you? Like if you could even learn the tools and the techniques that how you can use the potential of your subconscious mind just 5% more than what you were using. Can you imagine what it would be? That could be magical. That could be magical as in you can read the books in minutes, not in days. That means that you can remember a lot of things which you can not remember just in a normal course of action. You can learn things in very very less time. And not just that, you can even go, your limits will be extended, your experiences of your senses will get enhanced. That is, you will be able to hear better, you'll be able to see the things better. What I mean to say is that you'll be able to do certain things which would be sounding a little weird right now in a normal life. Say you must have seen people doing some very different kind of things. And we can see, even if you go in the past, you will be seeing there were people who used to live for years together, who used to sit in a single posture for years together in the form of saints and sadhus, and still they were not tired. But now today, if we try to sit for 15 minutes for meditation, we feel tired, right? So now the thing is that our mind captures so many images, and these images, out of these millions of images that we capture in a second, we could only store a few, that is maybe 5 or 7 image out of the same. But our mind has got a capacity so that when you practice something again and again, and store it in the subconscious mind, then subconscious mind take that behavior on a autopilot mode. That means you don't have to do any effort to activate it. It becomes completely effortless. So it becomes completely effortless from your end. Like sometimes, for initiating a particular task, you have to motivate yourself. Why do you want external motivation? Why you want motivation? Because you are not internally motivated, you are not feeling motivated from inside. What does that actually means? That means your emotions are not properly aligned, and because of that, the moment you think of doing something, say for taking an example of a morning walk, everybody know that morning walk is essential, everybody know that you have to take a good care of your health, everybody know that it is good for health, but very few are able to do it. Why? Because then when they think of doing it, immediately their internal emotions, they start thinking certain things. They think, oh, let's go, I'll go tomorrow, or what is the need, or yes, I'll do it someday. But they don't do it, they don't take the action. It is because their internal emotions, which are driven by the subconscious mind, doesn't allow them to do it. And can we, Pritam ji, you told a very important thing, that your beliefs, your values, and your attitude is what reflects your behavior. So what we can see is your behavior, but we can't see
what is your belief system. We can't see what is the values. We can't see how exactly your attitude is working. And if you really want to change it, if you know that there is certain belief that is bothering you, if you know there is some memory which is bothering you, how will you be able to change that? And can it create some wonders? Yes. So that is what I'm going to talk about, the power of visuals. So when we store a lot of visuals, not along with that visuals, we also store a lot of other information. Just for instance, I give you an example. All of you are sitting at your places, just close your eyes and think about a railway station. And when you think about a railway station, suddenly a picture pops up. You will be seeing a picture. Now, it's a time when one of you can unmute the mic and tell me that what exactly did that person see? Which railway station specifically did they see? Hi, Mr. Sharma. This is Kalpa here. Yeah, Kalpa. What did you exactly see? Yeah. So the visual which I saw when it comes to a railway station, it goes to the childhood memory wherein like we are going for vacation and the hustle bustle is going on and enjoying with my family and the cousins and everyone. So that's the visual which comes Wonderful. from it. Yep. Thank you. Kalpa, keep your mic on mute. I'll Sure. come again back to you, right? Perfect. Thank you. Can I have somebody else on the, they can unmute the mic and they can share their experience. What did they see? Hello. Yeah, Mr. Sharma, this is Sonika here. I'm from Jaipur. Sonika. And when I closed my eyes, it is, I think, the latest 2 years back. When I went for my cousin's wedding, I went for my cousin's wedding, and I have seen that. So this is the visual what I got. Wonderful. So that shows that just by a mere word, if I speak the word railway station, Sonika had a different experience, whereas Kalpa had a different experience. Now she saw something different which was related to her experience or her memories in life. Now I would again come to Kalpa and would like to ask you, did you just see the picture or you heard some sound also? So no, I actually heard sounds also. The chai wala is going and there is like popcorn is smelling somewhere. So that is something which is very prominent. Kalpa, and yeah. Kalpa, you said there is a smell of the popcorns also, right? Yes. Okay. I'll just keep you on hold for a moment. Yeah. Now I'll come back to Sonika. Sonika. Yeah. While seeing the railway station which you saw, did you hear any sound? You smelled something? You had a taste, something like that? Not really, but it is only that the coolie and everything. Like okay, so you heard the sound. It is not that I will not say. It is only a visual. I did not. It was just it was just a visual. Fantastic. So you can mute your mics, both of you. Thank you so much for your wonderful feedbacks. Thank now, you. what we could learn from this experience is that Kalpa had a very different experience. She saw a railway station along with the sound and the taste of the popcorns also. Whereas Sonika saw a railway station, but she could not hear a lot of sounds and she could experience a coolie. Now, this shows that everybody has a different experience when they see a particular incident. And out of these, you must have seen so many railway stations, but why only a particular railway station of that too from childhood memory came to her, knowledge or memory immediately? So that is something very different. So that is where we say that every individual has a different experience while communicating. You must be thinking that I have spoken a particular word, say for example, a bus or a train, but you don't know that bus and train doesn't mean the same for every person. Every person has a different experience. Every person has a different initiated emotions. And at the same time, they store a lot of information. It may be smell, it may be taste, it may be visuals. So there can be visuals, there can be audios, there can be feelings,
there can be taste or smell. All these are captured from your senses. Now what happens is, when you capture these information, your mind has a processing methodology where it has got its own meaning for the time. Time मतलब कुछ लोगों के लिए समय का मतलब it's okay वाला समय होता है. Somebody are very particular, some people are very punctual, some people are always late, some people do not care for time. So their emotions and thought process about time is different. They have a different thought process about the space, matter, energy. They have a different way of taking decisions. Some of the people take very fast and hasty decision. Some people take a very thoughtful decision. So everybody has a different way to take decision. Everybody has got their own vocabulary. Whatever you speak comes out of your own vocabulary that comes through your subconscious mind, which you have practiced over the years. You have different attitudes, you have different values, you have different beliefs, and you have different unique memories. So these many things are there which are in totality affecting your overall emotion. And because of that, you delete a lot of information, you distort a lot of information, and you generalize a lot of information. Let me give you an example. अगर मैं आप लोगों से अभी ये कहता हूं that okay, let's go somewhere. Okay, so when I am not specific where we are going, I said let's go somewhere. Now the answers will be different from everybody, because depending on what they like, what is their way of taking decisions, what is their time criteria, attitude, values, beliefs. So somebody will say, okay, let's go out to a distant place. Some will say, no, I don't have time. So there will be different answers that I'll be getting on the basis of their kind of deletion, distortion, and generalization that the mind does. And finally, at that time, what is their state of mind? State of mind is what? I'll come to the state of mind, but I would just say, हम सभी लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा सा घर खरीदना चाहते हैं, अच्छी अच्छी कारें खरीदना चाह रहे हैं, अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत अच्छा खाना खाना चाहते हैं. ये सब हम क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड. यानी आपको क्या करने से अंदर से वो स्पेसिफिक फीलिंग आती है जिसको आपने नाम दिया हुआ हैप्पीनेस. दैट इज व्हाट इज हैप्पीनेस. सो दैट इज एग्जैक्टली द स्टेट ऑफ माइंड. आपको मैं घूमने के लिए बोल रहा हूं, उस समय आप गुस्से के मूड में, योर स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट गुड, यू विल नॉट फील हैप्पी. सो ऑल दीज थिंग्स फाइनली डिपेंड, इन सब चीजों को की टोटलिटी है जो आपका फाइनल रिफ्लेक्शन आएगा इन द फॉर्म ऑफ योर बिहेवियर एंड इन द फॉर्म ऑफ योर एक्शन. So your actions and behavior are driven through so many different criteria and filters, which I have shown you. And that is why every individual has a different experience. Let us go further. Now, what happens is people generally are struggling. They want a lot of things. They have a lot of problems, but they do not actually know what exactly their problem is. And they actually do take the decision according to what they think. Let me give you an example. Sometimes we don't want to do something. We don't want to go out in the night time. Why? Because the person is having a fear for darkness. One of the participants sitting here in this workshop, she is, I would just share one experience. If she is there, she will just unmute the mic. Yeah, she is there, Sunita. So what she had is, the experience she had was that she is into field of writing for more than 20 years. She had got a wonderful linguistic skills, but she was really afraid of the technology use. I mean, she was not feeling like learning learning computers or any new software or computer based technology. So when we try to intervene in that and we try to understand what was the reason, she was not learning. That was the output, that was the result. But what was the reason that she was not learning?
The reason was there were certain memories, that there were certain emotions which were stored, which were not which were not allowing her to take action and learn those things. And to an extent that उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते थे. अगर उनको कोई कह दे कि आप है ना अभी मोबाइल पे ये नया सॉफ्टवेयर या एक नया ऐप इंस्टॉल कर लो, या आप वर्ड पे जाके कोई फाइल टाइप कर दो, तो लिटरली उनके हाथ पैर ठंडे होने लग जाते थे. I would request her to share her experience in the last 30 minutes when we will be discussing about the feedbacks and question and answers. तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते थे. अब देखिए ये बड़ा अजीब सा बिहेवियर पैटर्न है कि किसी इंसान को कुछ नया सीखना है और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं. Why? Because they don't exactly know what their problem is. And there was a very small problem which was sorted out, and the very next day she wrote a wonderful email. She gave me a, she started using technology very next day. So your action, your behavior immediately changes if you can do a little change in your internal emotional system. But उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें exactly नहीं मालूम होता, हम सिर्फ रिजल्ट बताते हैं. वो मुझे ये बता रही थी कि मुझे टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता, मुझे उससे मेरे हाथ पे ठंडे हो जाते हैं, पर उन्हें ऐसा क्यों होता है ये उनको नहीं मालूम था. So we have to actually find out the root cause, identify the root cause, and sort out the root cause. If we do not deal with the root cause of the problem will not, the problem will persist and it will never change. So हमें रूट कॉज आइडेंटिफाई करने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. आप अपने घर पे अपने साथ भी कर सकते हो. अगर आप बोलते हो कि मुझे कॉन्फिडेंस का इश्यू है, तो आप अपने आप से 5 बार वाई का सवाल पूछो. इट इज कॉल्ड 5 वाई मेथड. आप 5 बार अपने आप से वाई पूछियो कि भाई क्यों आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है. तो आपको लगा कि भाई मैं जब भी स्टेज पे जाता हूं तब मुझे कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है, तो स्टेज पे जाने में कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम क्यों होती है. ऐसे अगर आप वाई क्वेश्चन करके 5 बार पूछोगे, यू विल रीच द रूट कॉज. नाउ उनमें से कुछ ऐसी मेमोरीज भी होती हैं जो आपको पता नहीं है, यू डू नॉट एक्चुअली आर अवेयर अबाउट इट, बट दैट गेट्स स्टोर्ड. उनमें से कुछ बैड मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ फियर्स हो सकते हैं जो बहुत इंटेंस नहीं है, और कुछ फोबियाज हो सकते हैं. फोबियाज आर वेरी इंटेंस फियर्स. अभी बैड मेमोरीज क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि दैट मेमोरी इज अ रियल मेमोरी, but there is a possibility that it is just an assumption. It may be some dream which you thought about a lot of time, and slowly and gradually it became a reality for you. There may be a case where a fear becomes very intense when you keep thinking about it, and it takes the shape of a phobia. And if you have a certain bad memory or a fear or a phobia, then you start taking the decisions of your life accordingly. A person now let us understand what are the different types of fears and phobias. अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे, and if you go on Google and search out how many different types of fears and phobias are there, you will find more than 1,000 different types of fears and phobias. I'm just discussing a couple of very common type of phobias which the people have. Almost 1 in every 5th person has some other phobia. So there are phobias like thunder and clouds, phobia of water, going into deep water, going near water, taking a bath. There may be fears from plants, different types of plants, which is called dendrophobia. There may be phobia from reptiles, from horses, from dogs, or various different types of animals. Then there may be related to medical treatment, like from syringes, from doctors, dentists, blood. And there can be situational phobias like claustrophobia, as Pritam ji just said, going into lift or a closed space, or even if boarding a flight, so flying in a aircraft. So there may be, these are couple of very common fears and phobias, as I told you, and these are the names of the phobias. But there are some very different types, even like just when I example diya, fear of technology. Sometimes people have fear of males, fear of females.
There may be a fear of darkness. There may be fear of fire. There may be fear of height. There may be, so there are different types of fears. Some of the common again are claustrophobia into enclosed space. People, when they travel in buses or cars, they feel like nausea. That is also a kind of fear. Going into public places or crowded places, flying, going into social or public situations, spiders, heights, developing cancer, like they always keep on thinking and feeling that they will have a cancer someday. So even fear of death, that everybody has, but to a very intense level. Now, when you have these different types of fears, it doesn't allow you to take an action. And you start living with that fear for years together. You do not take any action to deal with that fear. But a normal fear can be dealt in not more than 10 minutes. And we have so many thousands of case studies which we have dealt with. Height phobia mein main aapko ek example batau. I was doing a workshop in Nepal and there was a gentleman who had a very intense height phobia, who couldn't see even from first floor terrace. नीचे की तरफ नहीं देख सकते थे वो. हमने टेस्ट करने के लिए, our workshop was on 5th floor. So I, along with some of the participants, we sent that guy to the balcony to test whether it is true or not. The moment he went near the parapet wall of the balcony, he immediately feels so intense feelings that he vomited. And the next 20, so when we asked him, he said, sir, I cannot resist going on even the 2nd floor and going to the balcony. But 20 minutes down the line, we tested him on 20th floor, 10th floor, and he was absolutely comfortable as if nothing is happening to him. So you can change things like in minutes. Your brain really have an extreme impact of your language that you speak. And I would, मैं अगर बहुत बड़ी बात नहीं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि जिंदगी में 50% आपकी प्रॉब्लम्स, 50% and more of your problem is just because of the kind of language that you are using. Language is an asset. Language is something which you can use to leverage also. Would you believe कि अगर आपको सही तरीका का लैंग्वेज पैटर्न यूज करना आ जाए, इसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज इज द ओनली टूल एंड लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो अगर आपको सही तरीके से लैंग्वेज यूज करने आ जाती है तो आप you can actually use hypnotic language, a kind of hypnotic language. Hypnotic language is something which influences your subconscious mind directly. It doesn't limit to your conscious mind. यानी आप जब कुछ बोल रहे हो तो बॉडी रिफ्लेक्ट करती है according to the command that the mind gives. Let me give you an example and we can understand it better. Okay, so wherever you are sitting, sit in a comfortable position. If you want, you can put your video on for some time, those who want to, and sit in a comfortable position and stretch both your hands in front like this. सीधे हाथ कर लीजिए इस तरीके से जैसे मैंने किया है, और इस तरीके से करके अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड जस्ट लिसन टू माय इंस्ट्रक्शन व्हाट आई एम सेइंग. So now both your hands I have tied up. On one of the hand I have tied up a helium balloon, a bunch of helium balloons. These balloons are having a lot of gas inside and that is creating a lot of pressure on your hand now. And in the other hand you have holded a bucket with almost 10 liters of water, and because of that water your hand is now feeling tired and it has started going down. The other hand, which has helium balloons tied on it, is going up, 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 and the hand which has got the bucket of water is now tired
and started going down, down, down. See your water, see that water is going in. Now I have put up some more water and the bucket has become still more heavy. And that is making your hand completely tired. Take a deep breath. And as you do, notice your bucket is now full and you have an increasing desire to let your arm drop with tiredness at a faster speed. And the other hand with a helium balloon is going in a very fast pace, up, up, up. Now, one or two of you can just unmute their mic and their camera and can share their experience. Anyone, whoever want to do it voluntarily. Anybody who wants to share their experience? All right. Hello. Okay. So, so the language, you must have observed that there was an intense pressure on one of your hand, which was going slowly and gradually upwards when you must have opened your eyes, and the other hand must have gone downwards. So it was going exactly the way the commands were given. On the contrary, you already knew that this was not the truth. There was no bucket, there were no helium balloons. So your mind actually follow certain instructions given in a certain way that it start behaving exactly the way you want your body to behave. So language plays an important role, and that is why until unless you know how you're talking to yourself and you know how you're talking to others, धीरे धीरे आप कुछ नए beliefs create कर लेते हो, कुछ नए values create कर लेते हो, और even आप ये कुछ beliefs दूसरों के भी create कर सकते हो. If somebody in your family is constantly pricking you and saying आप बहुत डरते हो, आपको confidence नहीं है, आप बहुत डरते हो, आपको confidence नहीं है, slowly and gradually that person will start feeling that I don't have confidence and I am lacking confidence. So language is something which we will learn in NLP to influence a human behavior, and you can influence it to any extent that can help you to get a better health. You can earn a lot of money, you can get a lot of knowledge, and you can start attracting the kind of things in your life that you want to attract. It may be anything. You must have heard about the law of attraction. Pritamji just said, law of attraction says that whatever you desire in your life, if you can imagine that, your mind can exactly imagine that, then it is going to come in your life. The situations automatically will drive in such a way that such kind of situations will come in your life. So you are actually attracting those type of situations because your thought is an energy. Energy is a frequency, and frequency, the energy attracts similar frequency of energy. So that is why it happens that you start attracting the kind of situations that is coming into your life. So if you have the knowledge and if you exactly know how to give the right type of commands and do the right type of manifestation, automatically the situations in your life will start changing. As I told you, happiness is a state of mind. आप किसी एक पर्टिकुलर तरह की फीलिंग को, जैसे अगर आपको कभी भूख लगती है तो देयर आर सर्टेन फीलिंग्स इन योर बॉडी. अब आपको भूख लग रही है, यू आर फीलिंग hungry, or if you are feeling thirsty, there are certain types of feeling that drives you and give you an indication that you are thirsty and you need water. These are feelings and emotions. Similarly, happiness is also a feeling or an emotion. There is a specific type of signals that the body gives you when you feel happy, and these are different types of feeling that you have, being sad or being happy.
Like there are peaceful feelings of being contented, thoughtful, intimate, loving, trusting, nurturing. There are sad feelings like being guilty, ashamed, depressed, lonely, bored, tired. There are scary feelings like being confused, rejected, helpless, submissive, insecure, or anxious. And some joyful feeling like being excited, sensuous, energetic, cheerful, creative, and hopeful. These are just feelings. And if you know how to program your mind in such a way that that feeling you can recall it immediately at your demand or at your wish anytime, then you can change the things around in your life. But if you do not do it, and if you do not deal with the problem at the right time, you do not really handle your stress at the right time, then what happens is slowly and gradually you start building up stress. It may be because of relationship, it may be because of breakups, it may be because of divorces, it may be because of conflicts and conflicts between family members, conflicts between the boss and the subordinates, conflict between the anybody in the society. So when you start building different types of stresses because of money, because of relationships, because of nothing, because of assumptions and fear, slowly and gradually you start building diseases inside. आप खुद सोचिए, आपकी जिंदगी में आज तक आपने जितनी बीमारियां देखी होंगी, उनमें से ज्यादातर बीमारियों के नाम अगर अभी मैं आपसे बताऊंगा तो they are all psychosomatic diseases. Pain is a psychosomatic. Most of the time it is an indication of your body that something is going wrong in your body. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है. Fever is an indication. It shows कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है. If there is an infection or there may be some part of the body which is not functioning well, you get fever. So that is the expression of a body to give you a signal. Similarly, there are, as and when your stress start growing, you start feeling different types of diseases and illness. Let's take an example. If you have a lot of anger, that would lead you to different types of headaches, migraine, chronic back pains. And if you have anxiety, there may be problems with your digestive system. You can have irritable bowel syndrome. You can have palpitations. If you are like anger, then again that leads to high blood pressure, heart diseases. And if you do not deal with the problems in a proper way, slowly and gradually, even the problems like rheumatoid arthritis, or your immune system is also a result of your state of mind. So in the corona age, I would say remaining positive is the biggest remedy. If you are at home and if you are happy, then you are much safer. But if you are anxious, you think something is happening around you, then definitely you are prone to get a disease. So what I would suggest in this corona time, that you should feel as if my body is functioning well, my immune system is perfect, and I am enjoying the best 21 days of my life with my family. The God, or no, maybe the nature or the time has given me the opportunity to lead the best and think about myself, and do something which I always wanted to do for years together, where I was given an excuse that I don't have time. So now you have the time. So feel happy. Don't let the stress build in your body. Otherwise, on one side, it would lead to have different types of diseases, even asthma or some other diseases, or on the other hand, it will give you anxiety, depression, panic disorder, sleep disorder, obsessive compulsive disorder at the same time, at sometimes bipolar disorder, mood disorder, eating disorders, personality disorder. So these problems, and finally some of people even go to schizophrenia or stress and panic attacks. So if you start building such kind of state of mind, then it may lead to a intense problem in your life and diseases.
Now, what you can do about it? What I would say is NLP gives you the tools and techniques that you will not leave your problems unaddressed. आपकी जिंदगी में अगर कोई छोटे से छोटा भी मसला आता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो स्ट्रेस का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे आपके बिहेवियर, हैबिट्स और वैल्यूज का हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है और आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि एक बिलीफ है, एक वैल्यू है और एक हैबिट है जो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इट इज लिमिटिंग मी, इट इज नॉट अलाउइंग मी टू ग्रो, then immediately you can take an action and you can change it like this just in minutes. It's like Maggie, you know, just 2 minutes. So you can change habits in couple of minutes. You can change your values and beliefs in couple of minutes if it is limiting you, if it is not allowing you to grow. So it can change the things around for you. And even Pritam ji also told about this. I would also come to this. Money, you know, people complain that I don't have resources, I don't have time, I didn't got the opportunity to do business, my father didn't allow me or whatever. But the real reason is that you do not have the right state of mind or the right feelings for money. So you have to build a relationship with money. And if you start building that relationship with the money, let me tell you, you know, in every problem, when there was demonetization, the entire world, you know, entire country was shut down and every business was at stake. But there were couple of business which were growing. Paytm had the biggest growth at that time. Today also, if I talk about, in the last 21 days, all the business are shut down. But I think Zoom is having a fantastic business because we are interacting through video conferencing. So you cannot say that bad is bad for everybody. Sometimes bad is good for many of us. Because in afternoon, we are sitting together. Otherwise, you would have been in your office and I would have been at my work. So we are sitting together in afternoon just because of this problem. So you can find good things in every moment, every time. And that is why you can see that what you think about money, your thoughts and beliefs, what are your emotions for the money? Do you really feel interested to earn money? Do you have that drive from inside? Are you interested from inside? Are your emotions activated? And what will happen if you get that money? What will you do with it? If you do not have a very clear about the idea about this, then the money doesn't start working for you. We have an example in the last workshop also. There was one of our participants who shared, you know, लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने से, वर्कआउट करने से, रनिंग करने से और डाइट मैनेज करने से वेट लॉस होता है. आई अग्री कंप्लीटली. पर मैं फिर भी आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जिन्होंने अपनी डाइट कंट्रोल की, एक्सरसाइज की, 1 किलो भी वेट कम नहीं हुआ. व्हाई? बिकॉज व्हेन दे गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एवरी डे दे से, oh, I am still looking fat. I have not even lost 1 kg of weight. I don't feel that I am losing my weight. Every time they go stand in front of the mirror, they say the same thing. I think we have one participant in today's workshop who has attended our previous workshop. Neha, are you there? Yes, sir, I'm there. All right. So she will be sharing her experience that how she could, lose 22 or maybe 20 kg and above weight in the last 6 months. There was one more participant in the last workshop, Nikhil, who also shared that how he lost 22 kgs of weight without doing much exercise and maintaining the diets. I would not say that there is a role for diet, there is a role for exercise, but until you have the right state of mind, you will not be able to, get the results. और अगर आपके पास सही स्टेट ऑफ माइंड है तो डेफिनेटली आप बहुत तेजी से वेट लूज करोगे. और मैं तो ऐसे एग्जांपल देखे जिन्होंने बिना एक्सरसाइज के भी वेट लूज किया है. बट यू हैव टू हैव द राइट एफर्मेशन, द राइट कमांड, द राइट प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड. Then Neha, I will come back to you just after 5 minutes. Yeah, thank you so much. So now the old habits and the new habits, you have certain habits, you want to change certain habits, you have been trying for a long time, but you're not able to do it. So you can do that with NLP in few minutes, provided you know how to, what exactly needs to be changed and how to do it.
So if you learn the tools and the techniques, it can change you to change your habits in very few minutes, you know, just 10 or 15 or 20 minutes, just that's it. So initially, you know, when we start, if you don't like doing something, but you want to do it, but you don't like doing it, so you say, I won't do it. If you do not have, if you do not have the capabilities or the resources, you say, I can't do it. But when you start having a desire and you feel that I want to do it, but you do not have the skills that how to do it, so you say, how do I do it? But then you have an internal desire and a feeling that I should take an action, and you start doing it. So you say, I will try to do it. And when you try to do it, you see that you are able to do it to an extent, and you say, I can do it. And when you have that confidence in you, you do it, and then you say, yes, I did it. So this entire story, then when you do not have right emotions and the right feelings, and you do not take an action, you start feeling, I do not have the capabilities. Let me tell you, Pritam ji started with a slide. I'll close with the same slide. He said, if somebody can do it, then anybody can do it. If somebody in this world can do it, anybody can do it. And that is why आप इतिहास में ऐसे एग्जांपल्स हजारों देख लोगे कि जब एक रिकॉर्ड एक बार टूट गया, उसके बाद फिर थोड़े ही दिन में कई बार टूटा, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया कि रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है. तो वो अवेयरनेस आने के बाद there is Cute 001. I will come to you. Raising your hand. I'll come back to you in just couple of minutes. अगर किसी को ये पता चल जाता है और उसको ये समझ में आ जाता है कि दुनिया में कोई एक इंसान है जो ये काम कर सकता है, और उसको ये डिजायर हो जाती है कि मुझे भी ये काम करना है, तो उसके बाद उसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहता. बट यहाँ पर so what I was saying is NLP can give you tools and techniques कि आप अगर किसी इंसान की इंटेलिजेंस को, उसके पेशेंस को, उसकी रीडिंग हैबिट्स को, उसके इवन लुक एंड फील को, उसकी ग्रूमिंग हैबिट्स को, उसकी स्टाइलिंग को, उसके अंदर किसी भी अच्छी क्वालिटी को आप अंदर लेना चाहते हो, आप उसके जैसा बिल्कुल बनना चाहते हो, यू कैन मॉडल देम, यू कैन बी लाइक देम, यू कैन टेक देयर geniuses in you, and you can change your things. प्रीतम जी ने एक और बहुत बात इंपॉर्टेंट बोली थी शुरुआत में अबाउट द लक्ष्मण रेखा. हम हमारे बिलीव्स, अपने हैबिट और वैल्यूज की एक लक्ष्मण रेखा अपने आसपास खींच लेते हैं. लेकिन अगर आपको जिंदगी में कुछ चैलेंजिंग करना है, आई थिंक NLP इज द प्रोग्राम विच इज फॉर द पीपल हु वांट टू टेक चैलेंजेस इन लाइफ. It is for the people who want to do something big in life. It is for the people who are not, वो लोग अभी बिल्कुल ऐसे convinced नहीं है, contented नहीं है कि बस हाँ जो कुछ है जिंदगी में सब सही है, उनके लिए NLP को कोई use नहीं है. But those who want to do something big, those who want to take challenges, those who want to really get something big in life, for them they can, they can use NLP in everyday life and become better every day. Because excellence का और क्वालिटी का कोई फिनिश लाइन नहीं होता. आप जब रोज 1% इंप्रूवमेंट अपने अंदर करते हो, तो वो 1% इंप्रूवमेंट इन योर सेल्फ एवरी डे कैन ब्रिंग बिग डिफरेंस इन योर लाइफ इन टोटलिटी. सो दीज वर कपल ऑफ थिंग्स विच आई वांटेड टू शेयर, एंड आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर and listening to me with so much of patience. Now I would like to come back to Neha, and then I'll come back to Sunita for sharing her experience, that how it happened and what happened, First of all, I request Neha to share, because she participated in, I think, May 2019 Jaipur batch. So Neha is from Bangalore. She is a content writer and a life coach. So I request you to kindly please share what kind of differences you found in your life after that. Thank you, sir. Thank you so much for the opportunity. So actually weight loss का example आपने दिया ना सर, उसका मैं आपको बताऊंगी कि it was like 9 years I was carrying this weight. I was 95 plus, and after that, after attending NLP, there was some kind of affirmations that I was making with myself,
पहले ऐसे होता था कि कोशिश बहुत करती थी पर वेट लूज नहीं होता था, बिकॉज एवरी टाइम आई हैज टू स्टैंड ऑन द वेट स्केल। आई यूज्ड टू ऑलवेज से 100 ग्राम भी पड़ा, 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ, 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ, एक्चुअली कम नहीं हुआ। एंड वंस आई स्टार्टेड स्टेटिंग दैट कम तो हो रहा है, कम तो हो रहा है, एंड ग्रेजुअली होने लगा। And the positive affirmations really made my life easy. And not only this is just one part of what I've gained in my life after NLP. There are so many things. In fact, sir, if you please permit, my daughter is here, Dhanika. She would like to share something about me, if you allow her to. Yeah, yes. Can please. Yeah, she's here, sir. Yes, go ahead, Nishu. Hi, sir. So, actually, Mama NLP के पहले मतलब full day she used to cry. She was very emotional, and now she's become emotionally strong. She's always happy, and she has a very good control on her anger, and she also spends more time with her. And she has got motivation to lose her weight, and she's dedicating more to that. Thank you, Dhanika. Thank you so much. So that was a real testimonial, because if somebody from the family members are giving that testimonial, that counts a lot. Okay. We also have Darshan Mehta from Ahmedabad, who attended our August training in Ahmedabad itself. We organized that training in Courtyard Marriott. And Darshan, I want you to share what exactly happened after a few months in your life so far as making more money and buying new house is concerned. Please share, Darshan. Thank you, sir. Actually, I attended the workshop, and after that workshop, I can say after 2 months, I just have a new home, new flat. It is not important that I buy that flat, but the important thing is that I was usually traveling to Pune, and there is one of my friend who is my partner in my business, and usually I stay his home when I was in Pune. So he has one terrace and a penthouse. So when in the morning I just go in the terrace, and at that time I just think that I want the same situation, the same terrace, and the same. There is one place like there is one table and there are some chairs and like that. And I think that I just want the same thing in my life. That was in my back of the mind, and I never share this. Even my father, even my wife, I never share this to anyone. Somehow happening after NLP, I just think that I want to buy one new flat, even though there is no need of to buy any no need any जरूरत नहीं था कुछ कि मैं घर को परचेज करूं. एंड एट दैट टाइम जस्ट ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते वापस अचानक से एक फ्लैट मेरे ध्यान में आया. वो फ्लैट का मैंने डीलिंग भी कर लिया, लेकिन वापस वो फ्लैट मेरे हाथ में नहीं आया. वापस मैं थोड़ा घबराने लगा. तो अचानक से एक दोस्त को सुबह में फोन किया, मैं वो फ्लैट देखने गया. और जब वो फ्लैट देखने जाता हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने देखा उसी टाइम बैठ के तुरंत उस डील को क्लिक किया. बहुत ही बड़ा अमाउंट था वो फ्लैट का. मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने एक ही चीज समझ में आया मेरे को कि वो टेरेस ऐसा है जैसा वो पुणे वाला था. वहां पे जो सिचुएशन उसके टेरेस पे मेरे को जो अच्छा लगता था, वो सिचुएशन सेम थी. बहुत बड़ा अमाउंट था, मैं ये बोल सकता हूँ मेरे रीच के बाहर था, फिर भी वो फ्लैट मेरा हो गया. और आप बिलीव नहीं करो कि अभी लॉकडाउन है, क्या है, कोई टेंशन नहीं हो रही है, सब अपने आप हो रहा है. मैं आप सोच भी नहीं सकते कि जो टेरेस मैंने देखा, मैंने मेरे टेरेस पे जाके आप सेल्फी लेते हो, और जाके पुणे जाके उस दोस्त के टेरेस पे जाके अगर आप सेल्फी लेते हो, तो यू कैन नॉट फील लाइक दैट यू आर इन पुणे और यू आर इन गांधीनगर. यू कैन नॉट फील लाइक दैट, एंड दैट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ आफ्टर एनएलपी. और मैं आप सबसे एक ही बात करूंगा, मैंने उतना सीरियसली एनएलपी को किया नहीं था. जब मैंने उसको किया था, मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ, अगर सीरियसली नहीं किया था और इतना बड़ा रिजल्ट आ सकता है, अगर सीरियसली किया जाए तो कितना ट्रिमेंडस चीज लाइफ में ला जा सकती है.
एक लैंग्वेज का मैं थोड़ा टाइम लेके एक चीज बताना चाहूंगा। आज ही मैंने प्रीतम सर से और विनय भाई को भी शेयर किया है। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप सामने जाके किसी को प्लान बताते हो फिर भी लोग उसको ज्वाइन करने से मना करते हैं। तो 3 दिन पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिससे मैंने एक स्टाइल को यूज किया, जहाँ से एक बंदा, अननोन बंदा जो बहुत पैसे वाला है, अगर उसके घर पे 2 मर्सिडीज है, एक BMW है, और बहुत बड़ा बंदा है, लड़की है बहुत बड़ी पैसे वाली है, वो इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करेगी। तो मैं रात को करीबन 2:30-3 बजे बैठा था और मेरे को ऐसा दिमाग में आया, एक बार NLP का ये लैंग्वेज जो है सही में काम करता है क्या। पता तो है ही काम करता है, लेकिन कई बार डाउट्स होता है तो हम ट्राई करना शुरू करते हैं। यू कैन नॉट बिलीव दैट, मैंने नाइट में 2:30 बजे एक लंबा लंबा मैसेज टाइप किया और उसके अंदर पूरा सा ध्यान रखा कि लैंग्वेज का, मैंने, मेरा टारगेट ये था, there is no target like that she will become a distributor or she will join the business and she will do the business. मेरा टारगेट सिर्फ एक ही था कि I will use this technique on her and she will send the details to me. अगर वो मेरे को डिटेल देती है तो NLP का जो लैंग्वेज पैटर्न है वो काम करता है, मेरे लिए यही था। और अगर मुझे लगा कि ये अगर उसका डिटेल नहीं आता है देन ये काम नहीं करता है, और यू कैन बी सरप्राइज, मैंने इसको यूज किया, 1.5 दिन के भीतर ऐसा हुआ कि उसका आंसर नहीं आया। तो मैं खुद टेंशन में आ गया कि इसका आंसर क्यों नहीं आया, अगर NLP काम करता है, इतना बड़ा फ्लैट का भी मेरे को रिजल्ट मिला है, तो काम क्यों नहीं करता है। वापस मैंने उसको छेड़ा दूसरे दिन रात को करीबन 11:30 बजे, हाई किया, उसका हेलो आया, और यू कैन नॉट बिलीव दैट दूसरे दिन करीबन 11:30 बजे उसने पूरा डिटेल मेरे को भेज दिया, और मेरे को ये एहसास हो गया कि हाँ, हमको इसके ऊपर सिंसियरली काम करना चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि देयर वाज अ क्वेश्चन कि दर्शन भाई ऑलरेडी गांधीनगर में अपने फ्लैट में रहते थे, लेकिन उनका एक सपना था कि मुझे एक पेंट हाउस चाहिए, और वो सपना उनका इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग हुआ कि जब वो पुणे गए और पुणे में उन्होंने एग्जैक्टली वैसा घर देखा जो उनको लगा कि मुझे ऐसा घर खरीदना चाहिए। मैं दर्शन भाई आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन बाय आस्क्ड बाय समबडी कि आपको अगस्त, आई थिंक यू अटेंडेड NLP अगस्त 19। yes, sir. तो ये yes, आपका जब क्लिक हुआ, मुझे भी मालूम है, आपने मुझे फोन करके बताया था, बट ये कितने महीने बाद ये डील आपका क्लिक हुआ? सिर्फ 2 महीने में ही डील क्लिक हो गया था। मैंने ऐसा समझिए अब नवंबर के अंदर मैंने इस डील को कंप्लीट कर लिया था, और अब मेरे पास वो जो टोटल अमाउंट था वो 75 लाख था, तो मेरे पास 25 कम हो रहा था। तो मेरे एक मुंबई का मेरा एक दोस्त है, अरे सॉरी US का मेरा एक दोस्त है, जिससे मेरे को सामने से कॉल करके बोला कि मेरे पास 25 अभी ज्यादा पड़े हुए हैं, एग्जैक्ट वही अमाउंट था। उससे मेरे को बोला ये अभी तू रख ले, बाद में मेरे को दे देना, मेरे को अभी जरूरत नहीं है। तो 2.5 महीने के अंदर ही वो क्लिक हो गया। ओके, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो सेकंड इंस्टेंस आपने शेयर किया, NLP में 2 लैंग्वेज पैटर्न्स हम सीखते हैं, एक मेटा मॉडल और एक मिल्टन मॉडल। मिल्टन मॉडल एक ऐसा लैंग्वेज पैटर्न है जिसको सेल्स में बहुत यूज किया जाता है, और अगर आपने सेंटेंस मिल्टन मॉडल के हिसाब से प्रॉपर्ली ड्राफ्ट किया है तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट यू नो व्हाटएवर रिजल्ट और आंसर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर पर्सन is going to you are going to get that answer. Actually, sir, I am little bit confused which I have used. I already sent you on WhatsApp. What I had used, I don't know. I'll let you know. You have already shared screenshots with me, so I'll get back to you. Yes, sir. We have questions from few of the participants. So सबसे पहले Ketki wants to ask a question. Vinay sir, Ketki has a question. So yes, Ketki, you can unmute yourself. Unmute yourself and you can ask a question. I would just like to add up one thing. What दर्शन भाई is telling, हमारा जो प्रोग्राम होता है 4 दिन का, 4 दिन के वर्कशॉप के there is a coaching process of continuous coaching process which goes on with every participant, which deals with each one of their individual problems, and when they are discussing their problems they come one to one with us, they ask their problem, they solve their problem. And I think Darshan bhai, Neha, there are many participants who are sitting here, even so a couple of them, so they will tell you that whenever they tell us or the problem, and we try to solve and we help them the best way we can. Yes sir, over to Pritam ji. Ketki, you can go ahead with your question. You can unmute yourself and ask a question. Ketki, are you there? Okay. We have somebody, I think she is not here. There is one more person who has a question.
I don't know. Anybody who has a question can unmute themselves and can raise the question straight away. Yeah, hi, this is Sonika again. I have a Sonika. question. Yeah, please. Yeah, I was, when Mr. Preetham was showing all those slides of conscious and unconscious and subconscious, when we were into that, there was a certain thing that was known as intuition. So I just want to understand that, how it is actually, how intuition, is it something that is your sixth sense, what people say, or is it due to your beliefs, or is it due to your experiences, and how actually it works? You must have heard about the subconscious. We have already discussed about the subconscious mind. And as I told you, that when you start thinking about something, there is a frequency of thoughts that you release, right? Okay. So it matches the same frequency of thought. Yes, it is a part. It is actually the role of the subconscious mind which comes into it. Preethamji, if you want to add up anything. Yes. Besides this, as Vinayji told, that you constantly, when you keep thinking about something, those thoughts have certain energy and frequencies, and those thoughts automatically get connected to the thoughts of similar frequency. So that's why intuition comes to you. One more thing, as I told you at the beginning, that your unconscious mind is a Google, it has a Google data. So whenever you ask for information, it goes into transderivational search, and I find so many things for you. Like from childhood till date, there are billions of experiences and information are stored in subconscious or unconscious mind, which you are not aware of. There are millions and billions data is there. And whenever you need some information, without your being aware about it, the information comes from your unconscious mind. So at time we call it intuition, but there is a possibility that it wasn't an intuition. This was an information already stored in unconscious mind, and every information which comes to your unconscious mind, it does not mean that it comes with your knowledge. Sometime when you are into subconscious or unconscious state, you are listening to music, but still your mind keeps gathering some information. So there is one more reason, that your unconscious mind gives you a suggestion, और आपको मालूम नहीं होता कि वो unconscious mind में पहले से store है, किसी भी form में उसने उसको store किया था. So at right time, your unconscious mind puts it forward to your knowledge, and we understand it to be an intuition. Okay. Thank you so much. Thank you. Over to somebody whose name is Cute, K-U-T. Oh, Ketki. Is it Ketki? Ketki, please ask a question. She has raised the hand. Nikhil. Nikhil Pawar, you have a question. Yes, please. Nikhil, your voice is not clear.